आज हमें नया चैप्टर पढ़ना है, मोशन इन ए प्लान। मोशन इन ए प्लान, ये जो मोशन इन ए प्लान, इट मीन्स दैट मोशन इन 2 डायमेंशंस। समझ में आया है? द मोशन ऑफ ए प्लान, मोशन इन ए प्लान इज नोन एज मोशन इन 2 डायमेंशंस। हम पहले पढ़ते थे 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन। अब देखेंगे हम डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल। ठीक है, let we consider a particle is moving in an xy plane along a path P and Q। यहां से इस तरह P and Q। ठीक है, let the particle is at A, ठीक है, at a time t1 with the position vector r1। This is the position vector r1। After some time, let the particle reaches at some time t2, let the particle reaches at B, and let r2 is the position vector at B। Hence, the displacement of the particle in time interval of del t, है ना? टाइम इंटरवल क्या है? t2 माइनस t1 इज इक्वल टू डेल टी। दिस यहाँ से यहाँ तक t2 माइनस t1 डेल टी, let it is equal to del r। This is the displacement। ठीक है, so a particle is moving in xy plane from A to B in time t1, let its displacement is del r। ठीक है, so according to triangle law of vectors, the closing side of the triangle is gives the क्या देता है हमें? the resultant vector। Now join A and B, simply join A and B। Displacement यहाँ से यहाँ तक, so this is OA, AB and BO। ठीक है, so OB is the resultant vector। ठीक है, therefore OA plus OB is equal to OA plus AB is equal to OB। ठीक है, OA is equal to R1 plus AB is del R is equal to OB is R2। ठीक है, और del R is equal to R2 minus R1। This is the position vector। ठीक है, मगर ये जो del R है, it is in 2 dimensions। so इसका होगा कि कहाँ से डिस्प्लेसमेंट? फ्रॉम x एक्सिस एज वेल एज फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है, so del R किसके बराबर होगा? It will be x2i plus y2j minus x1i plus y1j। ये x2 minus x1 will be the displacement along x-axis and y2 minus y1 will be the displacement along y-axis। इस तरह हम लिखेंगे del R is equal, this will be x2 minus x1 into I, it will be in x-axis, plus y2 minus y1, it will be along y-axis। ठीक है, वायर ये जो x2 minus x1 है, it is del x which is displacement along x-axis, and y2 minus y1 it is displacement along y-axis। ठीक है, therefore del R is equal to, it will be del xi plus del yj। ठीक है, this del R, this is the magnitude of the displacement, therefore del R will be equal to under root of x2 minus x1 का होल स्क्वायर plus y2 minus y1 का whole square। This will be the displacement along in an xy plane। So displacement of a particle in 2 dimensions is equal to del R is equal to del xi plus del yj। This is the position along x-axis and this is the position along y-axis। This is displacement along x-axis, this is displacement along y-axis। Okay, thank you।